Hello everyone, welcome back to Norcet with Jaspreet. So we are back with another new video on the updates related to AMTSL. So जब भी हम AMTSL की बात करते हैं, we are talking about which stage of labor? We are talking about the third stage of labor, number one. हम किस stage of labor की बात कर रहे हैं? We are talking about the third stage of labor. अब third stage of labor क्या है? Third stage of labor में active management of third stage of labor क्यों important है? So that the female does not land up into the PPH. Female PPH में land up ना करे. This is the reason that AMTSL is recommended. अब AMTSL का requirement क्यों है? ताकि female PPH में ना जाए. So now we have three proper steps which have to be followed in the AMTSL. Number one, which is the administration of a uterotonic drug. Uterotonic drug को female को administer किया जाता है as soon as the delivery occurs so as to increase the tone of the uterus and to decrease the chances of bleeding and the PPH, right? So अब uterotonic में हमारे पास तीन drugs World Health Organization अब recommend करता है. Number one is oxytocin, given 10 international units, IM or IV. Prioritize giving IV if you have a good IV stable excess. Fine. नंबर टू कार्बिटोसिन. अब कार्बिटोसिन क्या है? ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है. सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन मीन्स दैट इफ यू कैन नॉट मेंटेन द कोल्ड चेन स्टोरेज देन यू हैव टू यूज द कार्बिटोसिन, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन की तो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए. डू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स व्हाट इज द टेम्परेचर विच इज ऑप्टिमली रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीटोसिन स्टोरेज एंड द कोल्ड चेन सप्लाई. ठीक है, पहले तो ऑक्सीटोसिन, सेकेंड प्रायोरिटी में कार्बिटोसिन 100 माइक्रोग्राम्स IM और IV इट इज गिवन कार्बिटोसिन. नंबर थ्री इज मीजोप्रोस्टोल. मीजोप्रोस्टोल की दो डोजेज होती हैं, 400 माइक्रोग्राम या 600 माइक्रोग्राम्स गिवन ओरली टू प्रिवेंट फ्रॉम PPH. अब ये तीन ड्रग्स अब प्राइमरीली यूज होती हैं. जो मिथाइल अर्गोमेट्रिन पहले यूज होती थी, इट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has also given an update on PPH. PPH में क्या अपडेट दी है? अर्लियर एक क्लियर कट डेफिनेशन दी गई थी कि PPH means जब blood loss in the normal vaginal delivery or the cesarean section is more than 500 ml. But now there is an update. Now, if the blood loss is more than 500 ml, it is PPH definitely. But if the blood loss of more than 300 ml is accompanied with any one of the following clinical feature, that is, if the systolic blood pressure is less than 100 mm of Hg, diastolic blood pressure is less than 60 mm of Hg, shock index greater than 1, and number 4 is if the patient is having tachycardia of more than 100 beats per minute heart rate. ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी condition present है in the female plus there is a 300 ml blood loss also, then we will say that the female has landed up into PPH, which is the postpartum hemorrhage. Right? अब ये दो updates हैं which are definitely very important from the Norcet point of view, which is very important for Norcet 11 also, right? So do let us know what more topics you want us to discuss about the updates and stay tuned for more content. Thank you.